हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? होप यू आर ऑल फीलिंग वेल. Like before, I have come again in your service with some words regarding phobia. फोबिया संबंधित कुछ शब्द मैं आपके संग लाया हूँ. We will study together. So let's begin. Before I begin, I would love to take the name of Lord, the most benevolent and merciful. The very first word goes zoophobia. Okay, let's see its meaning. Aversion to animals or fear of animals. जंतु का भय. Okay, animals से भय. Like I have used an example, my comrade. What does it mean? Comrade means friend. Okay, comrade को हम दोस्त भी कहते हैं. Is too timid. Timid means fearful. He has zoophobia. He fears from animals. मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही डरपोक है और वो जानवरों से डरता रहता है. This is psychological and this is very common thing that men and women are having phobia, zoophobia. Okay, so hope you have got this word. Now see the next word. Hematophobia. Hemato means blood. Okay, hemato means blood, like hemoglobin. Okay, there are so many words have been formed from this root. So wherever you see the word hemo, you just know that it is referring towards blood. Okay, so the fear of blood, यानी खून रक्त का भय. लाइक sometime it happens that when there is blood spilling on the road because of accident, so we start having unconsciousness. हम बेहोश हो जाते हैं. यानी there are, especially this happens with women, because women and girls are fragile naturally. प्राकृतिक रूप से बहुत कमज़ोर होती हैं, तो they are unable to handle the such cases. वो नहीं देख पाती हैं ऐसे केस को, एंड दैट्स वाई दे हैव हीमेटोफोबिया. वो खून को नहीं देख पाती हैं और वो जो है अनकॉन्शियस हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं. लाइक आई हैव यूज्ड एन एग्जांपल. वेमेन आर फिल्मजी नेचर्ड. वो बहुत ही कमज़ोर नेचर्ड की होती है, नेचर उनका जो है नेचुरली. दे बिकम हीमेटोफोबिया. दे बिकम हीमेटोफोबिक, यानी वो हीमेटोफोबिक हो जाती हैं, यानी इनको ये फियर हो जाती है. व्हेन दे सी समवन ब्लीडिंग. किसी को उन्होंने देख लिया ब्लीड कर रहे हैं, खून बह रहा है, या कहीं खून का जो है क्लॉटिंग है, खून का जो है कहीं कलेक्शन है, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ फियर. ओके, दिस इज़ व्हाट वी कॉल हीमेटोफोबिया. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओक्लोफोबिया. ओक्लोफोबिया, व्हाट डज इट मीन? फियर ऑफ क्राउड, एक्सेसिव नर्वसनेस ऑफ मल्टीट्यूड रश. यानी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो उससे जो है रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है, डर हो जाती है. Like if we are in the traffic, okay, so we are unable to handle the coolness of our mind. We start having nervousness because of the people being there, because of the mob, because of the crowd. So we start having different reaction. We start having nervousness and anxiety. तो हमको जो है वहाँ पे हम कूलनेस ऑफ माइंड नहीं बना पाते हैं. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, इक्वानिमिटी. Equanimity, I have used this word, you can see in the previous video. So the word equanimity was the coolness of mind. तो वो चीज़ हम नहीं बना पाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है, तो यानी एक तरह से कह सकते हो कि फियर ऑफ क्राउड, यानी भीड़ से डर लगता है, भीड़ भाड़ में रहने का डर. दैट इज़ कॉल्ड ओक्लोफोबिया. ओके, होप यू हैव गॉट दिस वर्ड. लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड, साइनोफोबिया. Cynophobia. Cyno is Latin word that means dog, and phobia is you are already familiar with, no need to explain it. So fear of dog, कुत्तों का भय. Girls are cynophobic. They start crying when they see dogs barking, and this is very common thing, especially girls. They become cynophobic when they see any dogs barking. किसी कुत्ते को देखती हैं भौंकते हुए तो वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं, उससे ज़्यादा वो ही चिल्लाने लगती हैं. एज यू मे हैव सीन, जैसे कि आपने देखा होगा. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल साइनोफोबिया. ओके, फियर ऑफ डॉग्स. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, एस्ट्रोफोबिया. एस्ट्रो, वेयर एवर यू सी द वर्ड एस्ट्रो, यू जस्ट नो दैट दिस इज रिफरिंग टूवर्ड्स स्टार, लाइक एस्ट्रल, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोफिजिक्स. देयर आर सो मेनी वर्ड्स हैज़ बीन फॉर्म्ड because of this root word astro. So astro means star. तो फियर ऑफ थंडरिंग, फियर ऑफ लाइटनिंग, बिजली के कड़कने का भय, बिजली के गिरने का भय, जब बादल गरजता है उसका डर. ओके, तो वी ऑफन डेवलप एस्ट्रोफोबिया व्हेन द क्लाउड स्टार्ट थंडरिंग. ऑफ कोर्स, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी किल्ड बाय थंडरिंग. जैसा कि when there is a storm, when there is
डाउनपुर, तो लॉट्स ऑफ पीपल आर किल्ड बिकॉज ऑफ थंडरिंग, तो बहुत से लोग जो है ऐसा हो जाता है। तो एस्ट्रोफोबिया माने फियर ऑफ थंडरिंग एंड लाइटनिंग, बिजली के कड़कने का भय को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड, लोगोफोबिया। लोगोफोबिया, लोगो मीन्स स्टडी, logo means science and study like biology, okay, and logo means study biology, zoology, तो logy या logo, whenever you get this word, this is a root word, it means study, okay। logophobia, fear of study, अध्ययन से भय। My dear friend, is very common disease, it is very common fear, it is found in each and every student. Nobody wants to study, but everyone wants to be successful. But is this possible? It is impossible. How can you get fruit without planting tree? Is it possible to get fruit without planting tree? क्या बगैर बगैर पौधे लगाए हम फल पा सकते हैं? तो how can we be successful without study? तो लोगोफोबिया तो हमको रहता ही है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि विदाउट स्टडी वी कैन पास और वी कैन गेट आवर ड्रीम, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो लोगोफोबिया मीन्स फियर ऑफ स्टडी, अध्ययन से भय। एवरी वन ऑफ अस, हम में से सभी लोग जो है लोगोफोबिया का शिकार होते हैं। वी डोंट वांट टू स्टडी, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। बट माय डियर, वी हैव टू we have to philo logo, a logo file, like I have used the word logo file. Logo file means love of study, हमको ये होना चाहिए logo file, ना कि logophobia होना चाहिए। This is how we can clear our dream or our exam, okay dear, let us see the next word, toxicophobia। Toxic means poison, okay, fear of poison, विष का भय। डेफिनेटली एवरी वन हैज़ टॉक्सोफोबिया, हर किसी को टॉक्सोफोबिया है, बिकॉज पॉइजन टेक्स आवर लाइफ, क्योंकि ये जान ले लेता है, ये हमारी ज़िंदगी छीन लेता है। तो नो बडी वॉन्ट्स टू लव इट बिकॉज इट इज़ पॉइजनस एट द एंड ऑफ द डे। लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड, हाइड्रोफोबिया, एक्सेसिव फियर ऑफ वाटर, जल से भय। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन डिसीज, लाइक देर आर women and women, when they are near the water, the body of water, they start having different reaction, they get unconscious, जिसको हम मिर्गी कहते हैं, फिट, ओके। तो ऐसा होता है कि पानी जब कहीं रहता है, बॉडी एक बड़ी लार्ज बॉडी रहती है वाटर की, तो लोग जो है उसको देख करके अजीब सा रिएक्शन करते हैं। दिस इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिस इज़ साइकोलॉजिकल डिसीज़, ओके। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल हाइड्रोफोबिया। लाइक इफ़ वी गो टू द सी साइड, seeing the large sea, the body of water, we start having anxiety, or you can say a little bit nervousness. That's what we call hydrophobia. Now see now see, I have used an example, she is so fragile naturally, प्राकृतिक रूप से बहुत कमज़ोर है। फ्रेजाइल मीन्स दैट कैन बी ब्रोकन ईजिली, कोई चीज़ जो आसानी से टूट जाए, आसानी से रूट जाए, आसानी से वो जो है शैटर हो जाए, दैट वी कॉल फ्रेजाइल। सीइंग लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, शी गेट्स हाइड्रोफोबिक, वो जब भी एक बड़े पानी को देखती है, बड़े पानी मीन्स लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, पानी का कहीं कलेक्शन हो, सच एज पॉन्ड, लेक, ओशन एंड सी एट्सेट्रा, तो शी डेवलप्स हाइड्रोफोबिया, ओके। होप यू हैव गॉट दिस वर्ड। लेट अस सी नेक्स्ट वर्ड, जीनोफोबिया। जीनोफोबिया, फियर ऑफ बर्थ, जन्म का भय। व्हाट डज इट मीन? ऑफ कोर्स माय डियर, इट इज़ वेरी टफ टू बियर और टू डिलीवर बेबी। We can only imagine, but just ask this from men and from women. So we should respect women and our mother and sister, because they will be our mother, and they will become mother, and our mothers are our mother. So of course they have given us life, so we should respect them a lot, because this is very tough task, my dear, because they give us birth by risking their life. So of course they have xenophobia, because it is quite risky. At the time of delivery, they are battling for life and death. So this is very tough task. So we must respect women, okay? So xenophobia means fear of birth, जन्म का भय। Every woman or every women who are in the family way. In the family way means who are pregnant, who are going to deliver baby. That is what we call in the family way, has xenophobia. ऑफ कोर्स, क्योंकि जब उनको डिलीवरी का टाइम होता है तो उनको एक भय रहती है, साइकोलॉजिकल फियर, बिकॉज लॉट्स ऑफ पेन टेक्स प्लेस। सो दिस इज़ वेरी टफ टास्क। मे गॉड ब्लेस ऑल आवर सिस्टर्स एंड हु आर becoming mother, may God bless them.
So this is what we call xenophobia. इसी को हम कहते हैं fear of birth. Hope you got this word. Let us see next word, एलियोरोफोबिया. एलियोरोफोबिया, okay. What does it mean? Fear of cats. बिल्ली का भय. Like I have used an example. Mohan has एलियोरोफोबिया. He can't go to washroom alone at night. होता है कभी. This is common. Even I remember that when I was a child, back 10 or more than 10 years ago. So for example, if I had to answer nature call, I was having fear. I was not able to go to alone to washroom. I was just taking support from my mother. तो ये होता है कि जो लोग डरते हैं बिल्ली वगैरह से, रात में उनको भय होता है, तो वो यहाँ तक कि वॉशरूम में नहीं जाएंगे, वो माँ को लेके जाएंगे, भाई को कहेंगे भाई प्लीज़ लेट अस गो टू मी, कैरी अकम्पनी मी, आई हैव फियर. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एलेरोफोबिया, बिल्ली से भय. आई थिंक women, especially girls, have एलेरोफोबिया. Okay, at night they fear when they start the sound meow meow. Now see the next word, algophobia, fear of pain. Okay, algophobia, fear of pain, यानी पेन होने का भय. Like I have used an example, we used to have algophobia when we were children. जब हम बच्चे थे हमको ये पेन, ये algophobia था. क्यों? We hated injection out of fear. हम इंजेक्शन से डरते थे. When we were near the doctor, when he was or she was going to inject, then we start crying. Okay, so that's why we can say that we had algophobia. So it could be it could be the pain from syringe or injection, from any deep cut, from any anxiety, from the death of the people. It can be anything. Okay, so that is what we call algophobia, fear of pain, पीड़ा होने का भय. Okay, now the next word is ophidiophobia. Ophidiophobia, see the pronunciation, ophidiophobia, fear of snakes, सर्प का भय, सांप का डर. Okay, who does not have ophidiophobia? किसके पास जो इसका भय नहीं होता है? Everyone fears from snake. Why? Because snakes are very dangerous. They can take your life. Venomous, toxic cobra can take your life in a minute, in a millisecond. They are so poisonous. Okay, so they just sting, and this is how you can die. So we must be careful, especially in this summer season, because this is scorching heat, and because of heat, because of mercury going up, all the burrowing animals or burrowing creatures come out of their burrow, अपने बिल से आते हैं because of the heat. So we need to be precautious. We need to show precaution. Okay, so when we have this fear of snake, and everyone has this is what we call ophidiophobia. Hope you got this word. Okay, see the next word, gynephobia. Gynephobia, you know the word, you are familiar with the word gyne. Gyne means women, औरतों के बारे में ये. gyne means women. Whenever you see the word gyne, you just know that it is all about women, like gynecologist, and there was a word misogynist. Okay, misogynist means one who hates women, औरतों से घृणा करने वाला. gynecologist is a female doctor who cures the female disease. Okay, तो gynephobia means fear of women, औरतों का भय या औरत का भय. Each husband, I have used an example, it is very interesting example. Each husband develops gynophobia because of their Hitler wives. उनकी wives क्या Hitler होती हैं. They love their wives when they are engaged. They talk on the phone for 24 hours, but after some time of marriage, they start having gynophobia. Like there is a proverb, someone has said beautifully that marriage is like a wrestling. Two wrestlers shake hand before fight begins. The gynophobia, we start having gynophobia right after 1 month or 2 months after marriage, because now there is dominance of wife. So this is how we can use gynophobia, fear of women. औरतों का डर, तो औरतों का डर बहुत तरीके से हो सकता है. in many cases, like if any boy is philanderer, okay, he is just teasing the girls, and because of the teasing of the girl, he was caught red-handed, he was jailed, he was beaten by the police. Now he develops psychological disorder towards the women, so he will not try to tease any women or girls anymore. So you can say that he has gynophobia.
तो यू कैन यूज़ इन मैनी वेज ओके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ओके, जिस तरीके से ज़रूरत है आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल gynophobia. Okay, hope you got this word. Let us see the next word, cacophobia. You know the word caco. Caco is a root word, Latin word. This is prefix. Wherever you meet this caco, you just know that this is the indication towards bad, like cacography, bad handwriting, cacophonous, bad sound. Okay, and its opposite will be calligraphy. Okay, and calligraphist, एक अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने वाला. तो कैको मीन्स बैड ओके. तो कैकोफोबिया मीन्स फियर ऑफ अगलीनेस, यानी गंदगी का भय. लाइक आई हैव यूज्ड इन द एग्जांपल, नीता स्टार्ट्स वोमिटिंग इवन इफ शी सीज एनी वेजिटेबल बीइंग रॉटन. यानी नीता कोई गर्ल है, वो उसको उल्टी होने लगती है अगर वो थोड़ी सी सब्ज़ी या कोई ऐसी चीज़ जो है देखती है जो सड़ी हो, तो उसको जो है वो रॉटन हो गई हो, उससे बदबू आ रही है, तो शी इज़ cacophobic. And it happens like if we are going through a street and the street is full of filth and it is rainy season, so there are lots of bad smell coming out of that, so we start having cacophobia and we start having vomiting. So there you can use cacophobia, yani fear of ugliness. Next word is heliophobia. Heliophobia, what does it mean? Fear of sunlight. हेलियोफोबिया, फियर ऑफ सनलाइट, तेज़ धूप का भय. दीज डेज द सन इज़ pouring down, okay, fire, so people stay home, they have heliophobia. This is true that these days the sun is pouring fire, okay, यानी सूर्य जो आग उगल रहा है, स्corching heat है, तो people, majority of the people love to stay at home so that they can avoid severe sunshine, ताकि वो धूप से बच सकें. As you can see in the market that especially girls, school going girls cover their faces, their hands with mask and with piece of cloth so that they can avoid sunburn. Okay, so of course we need to show precaution in this scorching heat. तो heliophobia means fear of sunlight, तेज धूप का भय. Okay, these days the sun is pouring down fire. Now see the Islamophobia. Islamophobia was very prevalent recently, especially in European country. Fear of the religion of Islam. Islam का भय, यानी people who do not love the teaching of Islam, the religion and its teaching, its system and tradition. So this kind of fear if people have, this kind of hatred if people have, so this is what we call Islamophobia. But I think this is wrong. We should not have Islamophobia. Every religion teaches us humanity, love and affection. Religion is not bad. We people are bad. Our thinking, our mindset is bad. Okay. Each and every religion teaches the same, same teaching or teaches the same good things, love, humanity. So religion is same. We people differentiate. We people have bad mindset. Okay, so we need to be humanitarian, we need to be loving each other, and this is how the world will be very beautiful, because God is same, God is one, and we are the created people of the Lord. Okay, so we are the Genesis from one people, and that is Adam. So how can we say that we are different? It is only we who have differentiated on the basis of caste and religion. So this is quite illogical, and it is not good thing to have Islamophobia or any kind of phobia regarding religion. Every religion is equal and teaching the same kind of good things and love and affection and humanity. Okay, so we should not have Islamophobia. We should love each and everyone's religion. If we love others, our religion will be loved as well. So this is what we call Islamophobia. Okay, let us see the next word, batrachophobia. Batrachophobia. Okay, fear of frogs, मेढक का भय. Do you have batrachophobia? I think girls है, मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा इसका fear रखती हैं. Especially in rainy season, there are lots of frogs, varieties of frogs. Australian frog, full of yellowish color. They are making different sounds in the middle of night. So if you have fear of frogs, then you have fear of what?
फियर ऑफ बैट्रेकोफोबिया। ओके, तो जो मेढक से डर लगता है तो इस ऐसे फियर को हम क्या कहते हैं, बैट्रेकोफोबिया। Now see the next and the last word of this video is टाइगियोफोबिया। इस टाइगियोफोबिया फियर ऑफ हेल, नरक का भय या नरक में जाने का भय। हु डज नॉट हैव इस टाइगियोफोबिया, किसको नहीं डर लगता है? एवरीवन फियर्स फ्रॉम गोइंग टू हेल, बट इफ़ वी हैव फियर तो वी शुड आल्सो ट्राई टू learn good things. We should try to love other people, because this is the only thing that can save us from going to hell. If our performance is not good, how can we expect going into the paradise? We can't go. So if we want to avoid going into the hell, so of course we need to perform good activities, act of philanthropy. We should perform humanity, love of people without caste and gender. We should not torture others. So is stygophobia, this fear everyone has. Okay, so this is what we call is stygophobia, यानी नरक में जाने का डर. Because in hell there is hellish fire, there are different ferocious frightening creature that will tearing our fleshes, our body parts. So if we avoid going to the hell, then what do we need to do? We need to love people, we need to show humanity on the face of earth, we need to be religious, we need to be pious, we need to be loving, caring, daring and sharing. This is how we can be saved from going to hellfire. Okay, so my dear friends, I hope you have enjoyed all these words that I have mentioned with you. So please give your feedback and subscribe my channel, and don't forget to give me your feedback, because your feedback gives me motivation. Okay, I have just started shooting the video and bringing all this material for you, so I am novice. Okay, so your feedback will encourage me, and this is how I can bring lots of improvement in myself. So your feedback matters a lot. So hope you have enjoyed this video, and if you have, please do not forget to like and comment and share, as well as do not forget to press the red button, that is subscribe button. Okay, thank you a lot.